Was the decision to explore IVF, was it an easy decision for you and Gurmeet? It is never, nothing is an easy decision. शादी हो जाने के बाद immediately pregnant होना ही चाहिए. अगर नहीं हो रहा ज़रूर कोई problem है. What role did your work life play and did it get impacted in any way? I would not say that my IVF journey had any impact on my work life. But of course, being an actor, my work life had an impact on my IVF journey. Did you also experience any kind of societal judgment, any pressures, any unsolicited advices? I dealt with exactly the way how any other woman would. I was very pressurized. I felt very helpless. You know, your parents, they keep asking you, what is happening? Why are you not planning? And things like that. Hi everyone, welcome to Prega Talks by OVA News. Today we are joined by someone truly special, Debina Banerjee. She's an actor, a blogger and a mother of two. Her road to motherhood wasn't that easy. Multiple IVF attempts, disappointments, but a hope that never gave up. So today we go back to where it all started, the first time when she dreamed of becoming a mom and then what followed. So it's a story of hope, heart and resilience. Let's get started. Welcome Debina, welcome to Prega Talks. Thank you so much. So Debina, what did motherhood mean to you before it became real for you? Oh my God, it's like a lot of questions summed into like one question. But I think every girl, when they know about themselves, like right from childhood, when they see their mother with children, they automatically want to have their own children. And in our society, we are always prepared. You know, girl means बड़े होंगे, शादी होंगे, बच्चे होंगे. So बच्चे is like the, you know, it is synonymous to a girl child. Being a woman. Yeah, and I always wanted to have you know, two children because I had a sibling and मुझे भी ऐसा मुझे ऐसा पता था कि मुझे दो बेटियां चाहिए और वो बहुत ही बचपन में. मुझे एक मेरी बहन चाहिए थी पर by default मेरा भाई हुआ और भाई को मैं बहुत कोशिश करती थी लड़कियों जैसे कपड़े वपड़े पहनाने की और वो थोड़ा बहुत जब छोटा था ना तो पहनता था. उसके बाद थोड़ा बड़ा हो गया ना, 2 साल के ऊपर जैसे हो गया, मेरा कपड़ा उतार के फेंक देता था. तो मुझे बहुत गुस्सा आता था और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बेटियां होंगी और मैं उन लोगों को बहुत अच्छे से यू नो सजाऊंगी, क्यूट क्यूट कपड़े पहनाऊंगी. सो दैट्स द यू नो बैक स्टोरी ऑफ मी वांटिंग टू बी अ मदर. एंड जस्ट इमेजिन आप कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, नॉट रियली कीपिंग एनी स्ट्रेस, बट आप जो भी सोचते हो भगवान वो ही कर देते हैं अल्टीमेटली. I think manifestation is real. या मैनिफेस्टेशन इज़ रियल. मतलब द टॉपिक वॉज वेरी भलताई, यू नो, कि मैं भाई को लड़की बनाना चाहती थी, मतलब उसको लड़कियों वाले कपड़े पहनाती थी और वो पहनता नहीं था. तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बेटियां होंगी, मैं उन लोगों को ना अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊंगी, अच्छे से सजाऊंगी. एंड आई डू दैट टुडे. So Debina, when you got married and you actually decided to start a family, how did you go about it? Did you actually start tracking your ovulation or did you just decide to go with the flow? I got married in 2011 and I finally had my baby in 2022. So it was like Wow, after, it was a long wait. yeah, after 10 years. So I think my journey is something that a lot of people knows about, but फिर भी मैं बता देती हूँ. It's always important to know your ovulation days rather than being haywire, because sometimes you want to plan, sometimes you don't want to plan. Either ways, it is very important. There was substantial years planned to, you know, stay away from being parents because of work and things like that. कि आपको एक you know, काम भी करना है, तो शादी कर लिया तो सोसाइटी ने बोल दिया तुरंत बच्चे पैदा करो, तो वो भी नहीं ना. तो यू हैव टू प्लान इट अकॉर्डिंग टू योर ओन टाइम. एंड देन देयर वाज दिस फेज व्हेन आई वांटेड टू हैव अ बेबी एंड इट वाज जस्ट नॉट हैपनिंग. तो उस टाइम पे डॉक्टर के पास यू नो भागा दौड़ी काफ़ी शुरू हो गई. एंड यू नो डॉक्टर्स हाउ दे चेक, यू नो, दे प्रॉपरली एक पूरा सोनोग्राफी होता है एंड ऑल, to find out your ovulation days and all.
तो वो चीज़ मुझे लगता है कि काफ़ी इजी हो जाती कि अगर अभी जैसे ओवा न्यूज़ अवेलेबल है, यू कैन डू इट एट होम, यू डोंट नीड टू रश टू द डॉक्टर, डू लाइक एन प्रॉपर scan and all to find out your ovulation days. तो आप खुद कर सकते हो. So that was like a little bit of hassle period जो मेरा start हो गया था, to go to the doctor, find out क्या problem है, क्यों नहीं हो रहा है. So initially obviously doctors said that you try during your ovulation and that might work. But that's a different story that it did not work even then. I had many other problems which I came to know eventually, and obviously I opted for IVF, and finally after 10 years Liana happened, and immediately after Divisha also happened. Wow. Both my children. So, was the decision to explore IVF, was it an easy decision for you and Gurmeet? See, it is never, nothing is an easy decision. I somehow feel that our our society is such कि बहुत टैबू होल्ड करते हैं टू द थिंग कि जहाँ पे मतलब प्रेगनेंसी बहुत ऐसा लगता है कि बहुत ही नेचुरल लाइक शादी हो जाने के बाद इमीडिएटली प्रेग्नेंट होना ही चाहिए, अगर नहीं हो रहा ज़रूर कोई प्रॉब्लम है. या तो समटाइम्स पीपल आर स्टेइंग अवे from becoming a parent because they want to stay away because they have their work, they want to prioritize their career. Sometimes बहुत और भी problem हो सकते हैं, और हम अगर आज इस society में बैठ के we can talk about all kind of बीमारी and we are normalizing everything, even normalizing period, लेकिन वहाँ पे the fact that a woman cannot talk about the fact कि there are different problems, endometriosis, adenomyosis, a lot of things. आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं होगा ये है क्या, because nobody talks about it. Exactly. So I came to know of it. PCOD, PCOS के बारे में अभी काफ़ी लोग चर्चा में है कि लोगों people are talking about it. So a lot of people know about it. लेकिन मुझे पहली बार पता चला एंडोमेट्रियोसिस, मैं तो खुद ही आसमान से गिरी, है क्या. एडिनोमायोसिस, मुझे तो एकदम से डर लग गया, ये है क्या. इट्स abnormal tissue growth in and around your uterus. Exactly. And it is extremely painful and it comes on the way of conceiving and all. ये सब मुझे उस दौरान पता चला. And it's all lifestyle. Some certain lifestyles you can change, certain lifestyles you cannot change. जैसे प्लास्टिक का यूज़ इतना ईजी और इतना रेगुलर हो गया है कि आप रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर रहे हो वो प्लास्टिक में ही आता है. तो यू आर टेकिंग इन माइक्रो प्लास्टिक्स. घर में एल्यूमिनियम के बर्तन इतने इजीली यूज़ होते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल में पैक करके टिफ़िन में डालना तो इज़ अ फैशन स्टेटमेंट कि आप रोटी ऐसे कैसे डाल सकते हो, उसको एल्यूमिनियम फॉयल में फोल्ड करके रखो. मुझे पूरा बेसिक से अपने आप को चेंज करना पड़ा. बट इवन देन आई कुड नॉट टॉक अबाउट द फैक्ट दैट आई एम गोइंग थ्रू IVF बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, एंड दिस प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ ऑल दीज अदर फैक्टर्स. सो आई रियली वर्कड ऑन माई सेल्फ टू रीच कि कहाँ से इसकी शुरुआत है. जब मुझे पता चला कि इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि मैं बीमारी को ठीक कर दूँ, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है. तो आई एक्चुअली वेंट बैक टू द रूट कॉज. इट्स ऑल आवर लाइफ स्टाइल. पोल्यूशन को मैं क्या ही चेंज करूँ, जगह छोड़ के चली जाऊँ, कहीं पहाड़ में रहने लग जाऊँ, वो तो नहीं कर सकती थी. बट जो चीज़ों को चेंज कर सकती थी मैंने वो सारी चीज़ों को चेंज किया. एंड ऑब्वियसली साथ में IVF अपना कंटिन्यू रखी. And girls are not educated enough also about IVF. ऐसा लगता है कि वो कोई बैड वर्ड है, छुपके से करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, लोगों को पता चल जाएगा तो आपको शर्म आएगी. एंड देयर आर सो मैनी पीपल, मतलब सो मैनी विमेन. मैं जाती थी और मैं इतनी औरतों को देख के मैं हैरान हो जाती थी. इट्स रैम्पेंट, मतलब इतने लोग हैं, इतने लोग करते, बट नोबडी टॉक्स अबाउट इट. आई डिडंट नो अबाउट इट. मैं भी एकदम क्लूलेसली ढूंढ के पहुंची. एंड it starts about from extracting the eggs, and then fertilizing it, and then putting it back into yourself.
तो इतने इसके जो स्टेजेस थे मुझे कुछ भी नहीं पता था. आई वॉज लाइक एन अनाड़ी लर्निंग विद द फ्लो. सब कुछ ऐसा लग रहा था मेरे साथ बस हो रहा है और एंड आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो. सो या दैट्स हाउ इट इज़. सो देबीना, जैसे आपने बोला कि आईवीएफ जो है फिजिकली और इमोशनली दोनों ही बहुत चैलेंजिंग है. सो कैन यू जस्ट रिकॉल एज टू हाउ वाज इट फॉर यू फिजिकली, इमोशनली, हार्मोनली, and how did it impact you, physically and mentally, both at that point in time? There are two ways of looking at it. One is, I will say that I took it very very sportingly. बहुत ही मेरा अगर पूछे मैं तो बहुत ही स्पोर्टिंगली लिया था कि अच्छा कर रही हूँ, बिकॉज आई हैड नो नॉलेज. तो मैं आई वॉज जस्ट गोइंग विद द फ्लो, ऐसे कर रही हूँ. मतलब जो भी डॉक्टर्स बोल रहे थे आई वॉज गोइंग along with it. But there are lots of misconceptions about it. कि मैं किसी मेरी फ्रेंड को मिली थी recently, I will say, not during those days, because during those days nobody knew. Now that I have spoken about it, so a friend of mine the other day met me and she said that I also want to do this, but maybe I'll put on weight. क्या मैं मोटी हो जाऊंगी, क्या ऐसा होगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगी एंड ऑल. आई एम लाइक नो, दीज आर एब्सोल्यूट मिसकंसेप्शंस. आई वाज वर्किंग थ्रू आउट एंड there is no such this thing ki doctors will tell you to go home and lie down and things like that. You will lead a normal life, yes, but हम लोग बाकी सब के लिए जैसे टाइम निकालते हैं, इट्स ऑल्सो अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग थिंग, लाइक अ प्रिटी मच टाइम कंज्यूमिंग थिंग. और एंड व्हेन यू वांट अ चाइल्ड, आई डोंट नो, योर बॉडी, योर माइंड, योर एनर्जी जस्ट अलाइंस और आप बस कर सकते हो. इट्स अ लॉट ऑफ इंजेक्शंस, it's a lot of testing and it's happening every day. बार होते हैं, hormonal injections दिए जाते हैं and they make a lot of eggs at a time. Your body a certain way. Then they extract all the eggs and then they find out which is a good egg and then they make an embryo out of it. And but all throughout, if you want to do it, you can do it, because it is because you want to do it at the end of the day. And इसीलिए शायद बोलते हैं एक a girl is a girl throughout, but then जब वो माँ बन रही होती है या माँ बन जाती है, it's a different person altogether. So I think I saw a different side of me. I was just going through it relentlessly. I was not educated about freezing the eggs before. So I always take a chance in whichever platform I am in. Maybe हो सकता है कि कोई कहीं पहले मैंने बोला है वो मिस हो गया है, लेकिन if you have the chance, if you are in your 20s, just freeze the eggs. एक ही बार में बहुत eggs मिल जाएंगे, आप freeze करके रख सकते हो. Because just today morning I was reading a friend's Instagram story. She said that not all women wants to be a mother, some wants to travel, some wants freedom. I was also like that. Trust me, I was also like that. मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं मुंबई आई और अपना काम कर रही थी तो मुझे ऐसा लगता था मदरहुड बाद में, पहले मैं काम करने दो, मुझे काम करने दो. आई वॉज ऑलवेज हंग्री फॉर वर्क. आई वॉज रनिंग अराउंड, हसलिंग, डूइंग, थिंकिंग व्हाट टुमारो एंड रनिंग एंड ऑल. बट यू चेंज विथ टाइम. जैसे बचपन में आपको टीचर पूछते थे कि आप क्या बनना चाहते हो, तो एक बार आप एयर होस्टेस बनना चाहते हो, कभी आप डॉक्टर बनना चाहते हो, कभी आप टीचर बनना चाहते हो. यू चेंज, नो, कितना एकदम बचपन में आप, इफ़ यू लुक बैक इन योर 20s, इफ़ यू लुक बैक, यू विल रियलाइज़ कि हमारे प्रायोरिटीज़ बहुत ईजिली चेंज होते हैं. सो व्हेन यू आर इन योर 20s, if you are a career oriented woman, you will always feel ki no, that's not me, having a children is not me, it can wait. Of course it can wait, but if you freeze your eggs, it can really wait, like an insurance. Maybe you don't need it when time comes.
maybe things will just happen so easily. But what if tomorrow your mind changes and you just feel कि नहीं, it's my, now I want to become a mom and it's late. तो मेरा वो हो गया था एक्चुअली. तो बहुत बारी एक ही चीज़ करना पड़ रहा था टू गेट द राइट एग, टू गेट द राइट एम्ब्रियो. एंड यू नो जो प्रोसेस ईजीली हो जाता वो मतलब एक साइकिल में चले जा रहा था, मंथ आफ्टर मंथ, एंड देन यू हैव टू टेक अ ब्रेक and start it again all over again. And it's all worth it, I will say, if you have a supportive husband. So I could do all this because I had a pillar with me, my husband. If it was not for him, I don't think anything would have been worth it. You know, किसी को खुश करने के लिए कि I'm going through it, now he'll be happy, it's not worth it. If he's not happy, he will never be happy. So he has to just be with you, and you can sail through it. And I think it was just before the last attempt when Gurmeet, he saw me through this success, like failures and half success and failures and half success and all those stuff. He said that, you know, let's just stop it. Yeah. It's not worth it. You and me are complete. We don't need a family to complete us, and you and me are a family. And we actually thought about all the beautiful times that we had together. We traveled, you know, we love एक्सप्लोरिंग क्विजीन, ये सब कुछ अपने में सोचा और फिर मैंने बोला ठीक है एक बार लास्ट ट्राई करते हैं. एंड दैट्स व्हेन इट हैपेंड. Alright. So that point in time you were also a full-fledged professional actor. What role did your work life play, and did it get impacted in any way? You know, I mean, because you were, like you said, it's a lengthy process. You have to go to the doctor multiple number of times. What impact did it have on your work life? I would not say that matlab, you know, my IVF journey had any impact on my work life. But of course, being an actor, my work life had an impact on my IVF journey. Because you know, जब मैंने सोचा कि अभी बस फुल फ्लेजेडली एक बार कर लेती हूँ, फिर मुझे उस टाइम पे एक शो मिल गया जहाँ पे एकदम मुझे पतली रहना था, और जस्ट मैंने शो लिया था. इट वाज विश फॉर कलर्स, सो फॉर यू नो गुड GC चैनल. एंड वहाँ पे विश कन्या बनी थी, ऑल सेक्सी एंड ऑल. तो फिर मैंने शो पकड़ लिया, और उसके बाद मैंने सोचा अब मैं मतलब मैं मेकर्स को क्या बोलूँगा, मैं प्रेग्नेंट हूँ. यू नो, इफ़ आई एम, और कोई भी चीज़ हाफ माइंड में नहीं करना चाहिए. जैसे कि यू आर डूइंग द ट्रीटमेंट बट ऑल्सो यू आर थिंकिंग नो आई हैव अ शो इन हैंड विच आई एम डूइंग, तो इसीलिए थोड़ा कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो तो ही अच्छा, तो फिर कर ही क्यों रहे हैं. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो दिस इज़ अ टर्मोइल दैट हैपन्स इन द माइंड ऑफ ऑल द वर्किंग वुमेन, आई फील, और स्पेशली इफ़ यू आर इन द इंडस्ट्री वेयर यू हैव टू लुक गुड, you know, where you have to you know, be a certain way. Kind of that half mind also did not played the role of not having the child at that time. But I don't think कि उसके लिए कोई दिक्कतें होती है, because if you are working, especially I will say that it is easy all the more, क्योंकि तब आपका पूरा दिल दिमाग और फोकस एक जगह पे नहीं होता है. आप एक चीज़ को लेके फालतू के नहीं, फालतू का नहीं सोच, बिकॉज हाफ ऑफ द थिंग्स आवर माइंड थिंग्स नेगेटिव ओनली. क्या होगा कि नहीं हुआ तो इफ़ यू आर वर्किंग ना, तो कहीं ना कहीं आपका मतलब एक्स्ट्रा जो थॉट्स होते हैं ना, बेकार वाले थॉट्स, वो नहीं होते हैं. सो आई वॉज गोइंग थ्रू द अदर प्रोसेसेस, यू नो, लाइक द एग एक्सट्रैक्शन एंड ऑल. मुझे नहीं लगता है कि कोई इट क्रिएट्स एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंसेस, बिकॉज आपका काम एक तरफ, आपका ये एक तरफ, आपको हाँ थोड़ा टाइम निकाल के देना पड़ता है ज़रूर, बट इट्स मैनेजेबल. इफ़ यू आर फॉलोइंग अ गुड डाइट, इफ़ यू आर फॉलोइंग अ प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन, you don't put on weight. And if you are working, then तो आपका आधा टेंशन भी मतलब काम में बिजी रहता है. You know, your mind is in the work, so you are not thinking unnecessary things about what is going to happen. Exactly. You know.
So did you also experience any kind of societal judgment, any pressures, any unsolicited advices, and how did you deal with them? I dealt with exactly the way how any other woman would. I was very pressurized. I felt very helpless. I felt irritated. मैं मतलब होता है ना कि एकदम से मतलब I was losing it, definitely. So and the societal pressure was मतलब I'll start from the nearest, so it is easy for people to understand. You know your parents. They keep asking you, you know, what is happening, you know, why are you not planning and things like that. From your in-laws, when they just say very simply maybe, but that simple thing does not sound very simple at that moment when they say good कि खुशखबरी कब दे रहे हो. एकदम से मेरे कान में गूंज उठा खुशखबरी कैसे कब दे रहे हो. मुझे एकदम से लगा क्यों मैं ऐसे खुश नहीं, आपको खुश नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं. And I immediately understood that it's all, everything is triggering from that, you know, one point that I'm trying and it's not happening, and then people are, why are people, you know, asking me like this. So and I think and I know it so well today, you know, one thing is don't ask. If you are trusting the woman to do her own job, if you are trusting the woman to go out there and, you know, work and be a professional, then itna bhi to trust karo ki, you know, she will plan her life. Maybe she is planning, but, you know, asking all those questions. So this is to the near and dear ones, I'll say. And uske aage trolls and this that, you know, I was walking out my restaurant mein khana kha ke nikli, I was wearing a jumpsuit, a little bit of my lower tummy was shown. तो मैंने थोड़ी देर के बाद मैंने देखा, you know, the paps के photos जहाँ पे they have made a full-fledged big tummy and said she's pregnant, where I was not. So it was hurting me, you know, hurting me right there. एकदम से, you know, एकदम से मन कर रहा था बोलूँ कि, you know, I'm not pregnant. But at the same time मुझे बोलने को भी मन नहीं किया. मुझे लगा I'll negatively manifest, तो मैं चुप ही रहूँ. You know, it was a very chaotic situation. Matlab, I did not handle myself well, and I was very chaotic at that moment. I was losing it, and सारा गुस्सा किधर भी निकल रहा था. It was just all over. I was very messed up at that time. Any advices that were given to you unsolicited, now when you go back, you laugh at them and you say, okay, well, you know, there were advices coming to you from this one, this friend, maybe that parent, that auntie, that, you know, relative. So do you think you listened to any of those, or were you just nonchalant about it? I don't remember also anything, trust me. उस टाइम पे इतनी चीज़ें आ रही थी तो मैंने अपने आप को एकदम से ब्लॉक कर दिया था. मतलब मैंने पूरी दुनिया को कट ऑफ कर दिया था. सिर्फ मुझे वो हर्ट होता था जब लोग मुझसे पूछते थे. बाकी एडवाइस वो तो उसके और ही एक स्टेज, वो तो पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर ओनली. एंड आई फील दैट द फास्टर यू फॉरगेट द बेटर इट इज़, बिकॉज forgiveness is the best thing possible, and forgiving is not somebody else. Forgive yourself and just think that, you know, trust time, that time is God plans everything at the right time. So whatever has happened must have happened for the best. I have become a tougher person. I have learned how to cut all the negative things off. It's because of the things that I have faced. आज कोई भी मुझे कुछ बोलता है ना, मुझे ऐसा लगता है मैं जो देख चुकी हूँ एंड जो फेस कर चुकी हूँ, आई एम सो टफ टुडे, एंड मुझे आज कोई भी चीज़ असर नहीं करता. एंड थैंक्स टू ऑल दोज टाइम्स. So Devina, do you think that if you had access to OVA News at that point in time, it would have made it easy for you? Definitely would have been easier. And you know, when I look back and I see that कोई सी भी चीज़ें, you know, आपके everything goes haywire. We just trust the time and think that हाँ सब कुछ automatically हो जाता है. But after I went through all these things, I can 100% say that कोई भी, you know, it's a very time of the woman, I will say. It's not the time of anything, you know. It's your monthly time that your body works superbly in a clock,
And if you can, if you know the time by your clock, if you have the watch in your hand, which is the one use, so many things just gets easier. You know, the frustrating time of our planning, but things are not happening. Sometimes the first thing that we feel is, oh my God, there's something wrong with me. But I think it's also about you know, doing things at the right time. And also I will say, you know, you only heard about my IVF journey, but my second child was born, you know, it's a natural conception. When I had so much, you know, problem, when I had a lot of, you know, a lot of things, मतलब बोलते हैं ना, प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, डॉक्टर्स भी कोई चीज़ कर नहीं पा रहे थे. उसके बाद you know, I conceived naturally, and that is, I will say, you know, your body has the capacity to do a lot of things. Trust your body, and अपने बॉडी को कोसो नहीं, उसको प्यार करो, और उसको, उसकी ब्यूटीफुल टाइमिंग है सब कुछ करने का. एंड your body has got the magical power to do a lot. Just उसको, you know, just don't think कि there's a lot of problem. You know, मुझ में problem है, मुझ में कोई problem नहीं है. My body is good, my body is beautiful, my body is healing. Things just happen. So when I had no clue, I mean, my first baby was just born, and after a couple of months, you know, I was feeling very uneasy. I'll just say this thing. I was feeling very uneasy, and my husband said, maybe, you know, you are, maybe it's a lot of pressure around you and things like that. Go take some rest. I took rest a day. Even then I was feeling little uneasy, little off. I learned to understand and feel my body. It was very little off. It wasn't like I was vomiting or something, nothing. So I was feeling very ashamed to, you know, go to a shop and buy Prega News, but I ordered it online, and it came, and my mom opened it. My mom is like, see, this has come. I just didn't know what to tell her. I said, yeah, keep it aside, it's for a shoot. She kept it aside. I took it inside my room, and oh my God, what will my mom think? What will, you know, everybody think? I told Guru, obviously, you know, why don't you go buy a Prega News and come? He was like, no, the shopkeeper will do. Nothing has happened. I mean, because both of us knew nothing was working out for so many years. Yeah. But I ordered it online. And I couldn't, you know, wait for the next morning also. I took a pregnancy test, yeah, in the night before sleeping, and it came out positive. I called Guru from the washroom. My hands were shivering. I called him. He came. I was shivering, and he said that what happened? I just showed him the kit. He was like, what is this? I'm like, he couldn't believe. So he's just looking, what is this? Like, very matter of factly. I said, I'm pregnant. He said, no, nothing, no, it's wrong. I said, it cannot be wrong. So, you know, we booked a doctor's appointment the next morning. But I was sure. I was feeling it inside, and the Prega News gave me the news in the night only, before sleeping. I almost couldn't sleep the night. In the morning, I went to the doctor. She did some checkup, and she said, yes, you are pregnant. Wow. We couldn't believe. So your body has the power to work out magic. So we just need to trust and thank our body always. So you did experience I experienced magic both. Yes, I experienced the second time both. around. And I would say that, you know, जो हम लोग बहुत ये सोचते ना कि हमें प्रॉब्लम है, कुछ नहीं हो रहा है. Trust your body, trust the time. Maybe it's not the right time for you. So you know, just go with the trust. You know, it's all science. Sometimes you have you know, ovulation kit to check your ovulation date. You have
everything in your hand, but the first thing that we do कि बाकी सब चीज़ों को छोड़ के हम अपने को कोस लेते हैं पहले कि you know ज़रूर मुझ में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि डर जाते हैं, वो सोसाइटी has framed us only like that. Exactly. So what is it one thing you now that you've gone through the whole cycle of IVF and you know the international conception, what is it one thing you want you know any other woman who's going through a similar situation should know, and coming from your own experience? First thing I would say is get your eggs freezed. If you want to work and if you have that mindset that I don't want to have a baby, I'm not telling you that it's not okay to think like that. It's okay to think like anything, but you never know, you might change and then regret it later. So you know, that's the first thing, like an insurance. Second thing is, don't be afraid of the fact that when you are trying for a baby and it's not happening, don't be afraid of the fact that, oh, it's not happening, there's some problem with me. Maybe there is no problem, maybe it's just a matter of time, and the more we are open about it ना, लोगों के ये जो फालतू के सवाल है वो आने कम हो जाएंगे और आपका ट्रॉमा भी कम हो जाएगा. क्योंकि मुझे उस टाइम पे मुझे भी शर्म थी, मैंने किसी को आई नेवर स्पोक अबाउट इट दैट यू नो आई एम गोइंग थ्रू दिस IVF जर्नी. तो लोग मुझसे बार बार पूछते थे. दैट वाज पुशिंग मी inside that you know like a deep hole all the more. So if I would have been more open about it, I would have discussed about it, or it's not a thing to discuss, but you know अगर mentally भी मैं अगर वो होती कि क्या फ़र्क पड़ता है, you know जैसे दूसरी बीमारियों को हम लोग एड्रेस करते हैं, you know आज मुझे बुखार है, तबीयत ठीक नहीं है, डिप्रेशन हो रहा है, लोग तो उसको भी आज कितना ईजीली बात करते हैं. तो अगर ऐसे ही हम लोग अगर बोले कि यू नो आई एम गोइंग थ्रू माई IVF जर्नी, तो बहुत लोग शायद फालतू वाले सवाल नहीं पूछेंगे. लोगों को भी बहुत इंक्विजिटिवनेस है ना, तो वो लोग थोड़े इंक्विजिटिव कम होंगे क्योंकि उन लोगों को पता होगा कि यू नो या यू आर डूइंग इट. सो आपके ट्रॉमास थोड़े कम होंगे और आप बॉडी को जितना कम ट्रॉमा दोगे, कि जितना कम कोसोगे कि यू नो बहुत गुनाह कर लिया मेरे बॉडी ने, तो बॉडी विल हील एंड यू नो विल डू थिंग्स नेचुरली. Thank you, Divina. Thank you so much. It was really lovely to listen to you. Thank you for coming. Thank you. Thank you everyone for joining us today. Stay tuned for the next podcast.